हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज होइसे हमर 2026 तो समस्त को विशिंग ए हैप्पी न्यू ईयर 2026। आशा करे आपण मानके ए वर्ष आपनकर जीवन एवं चलापथ सब बेले कुसुमित रहू एतिकी प्रार्थना करछि भगवान पाखरे। तो जहाँकि आप देखी प्रीवियस वीडियो रे हमर पार्ट 2 3 4 5 जाइथिला। तो पार्ट 6 एटा होचे हमर टेस्ट सीरीजटा। ठीक अच्छे, टेस्ट सीरीज रो टोटल 80 क्वेश्चन। जो 80 क्वेश्चन मध्य आपण माने पाइबे कि हमर टॉपिक वाइज और देखंतु कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रो आसीबो 10टा क्वेश्चन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग रो 10टा क्वेश्चन, देन एनवायरमेंटल हाइजीन रो आसीबो 10टा क्वेश्चन, फास्ट एड रो आसीबो 10टा क्वेश्चन एवं मेंटल हेल्थ नर्सिंग रो 10टा, न्यूट्रिशन रो 5टा, एमती है कि टोटल रहिबो 80 क्वेश्चन। तो फास्ट पार्ट 1 रे मु आपण डिस्कस करबे 40 क्वेश्चन। हमरो 40टा क्वेश्चन होचे। तो वीडियो लेट न स्टार्ट करछि। जदि आप चैनल नवा त प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करी बेल आइकन ऑल रखंतु, जा पर वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथम पाई परिबे। तो देखंतु बहुत ही इंपोर्टेंट जोटा कि हम रिपीटेड क्वेश्चन गुडा ए सब। तो वीडियो जमार स्किप करंती नै। तो नंबर 1 क्वेश्चन कहूचे हमरो ना द क्रूड डेथ रेट इज कैलकुलेट बाय। तो सीबीआर जोटा क्रूड बाथ रेट कैलकुलेट हम केमती करा हुए। तो ये ऑप्शन रे अच्छे हमर कोन ना डिवाइडिंग द टोटल पॉपुलेशन बाय द नंबर ऑफ बाथ इन द बाथ 1 decade, dividing the total population by the number of bath in 1 year, multiple of multiplying the total population by the number of bath in 1 month, dividing the total population by the number of death in 1 year। तो केमती कैलकुलेट करा हुए हमरो क्रूड बाथ रे सीबीआर टा ना हमरो नंबर ऑफ bath in 1 year divided by total population into 1000 per year। तो एटा हला हमर कोन क्रूड बाथ रेट का फार्मूला। तो ऑप्शन बी हेबो हमर राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2 रे कोन कहूची ना कहला द C section of menstrual cycle at the end of a woman's reproductive year is referred to। जदि इन ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल ताको हम कोन कहिताउ एमेनोरिया, मेनोपॉज, मेनार्की और मेनोरेजिया। एंड द करेक्ट आंसर इज हमरो मेनोपॉज। मेनोपॉज होचे कोन जेटा हमरो परमानेंट स्टॉपेज ऑफ हमरो मेंस्ट्रुएशन। ठीक अछि। एमेनोरिया कोन एमेनोरिया होचे कोन हमरो absence of menstruation। मेनार्की होचे मेनार्की कोन जोटा कि हमरो फास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। ठीक अछि। फास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड नॉर्मल एज ग्रुप केते ना 9 रु 15 वर्ष। तो नॉर्मल देखा जे केते ना हमरो 12 ईयर एज ग्रुप रे। एवं मेनोरेजिया कोन जोटा कि हमरो हेवी ब्लीडिंग होई थाए। ठीक अछि। हाँ आउटे कोन मेनोपॉज एज ग्रुप केते परमानेंट स्टॉपेज ना 45 रु 55 ईयर ऑफ एज ग्रुप रे कोन मेनोपॉज टा हमरो देखा जाए स्टॉप होई जाए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, which assessment would be indicate the woman is a true labor। को स्टेटमेंट टा इंडिकेट करथे गुटे ट्रू लेबर पेन। देन ए रे अछि membranes are rupture and fluid is clear, progressive cervical dilation with 90% efforts, then presently part is engaged and not floating, contraction at least 30 seconds and every 5 to 10 minutes। कोन ना हमरो
progressive part is engaged sorry progressive cervical dilation ହେବ ଏବଂ 90% ଏଫୋର୍ସ ହେଲେ ତାକୁ କ'ଣ କହିଥାଏ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆମର ट्रू लेबर पेन इंडिकेट ठीक है प्रोग्रेसिव सर्विकल डायलेक्शन होइथिबो एवं 90% एफर्ट्स थिले ताको हम कोन नाम ट्रू लेबर पेन देन क्वेश्चन नंबर 4 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग गोल आर यू एम फॉर व्हेन यू टीच ए प्रेग्नेंट वुमेन हाउ टू डू केगल एक्सरसाइज देखो केगल एक्सरसाइज मान कौन केगल एक्सरसाइज कौन हुए ना आमर कौन ना आमर पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कहुए ठीक अच्छे एम कौन ना कहला प्रिवेंट द पेरिनियल लैक्रेशन बाय ना स्टिमुलेट लेबर कंट्रैक्शन और लूज प्रेगनेंसी वेट क्विकली एंड इंक्रीज पेल्विक मसल टोन जेहेतु कीगल एक्सरसाइज कौन ना पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कह जाए तो कौन से कौन हुए ना आम पेल्विक मसल टोन जोटा कि आम इनक्रीज होता है सो ऑप्शन इज योर डी इज द राइट आंसर देन एटा आम ओटी पॉलिसी एग्जाम रे आसी तो कौन कहला व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज ए कॉमन टाइप ऑफ फीमेल पेल्विक शेप विथ फीचर सच एज राउंड तो जदि क्वेश्चन आसब किडनी शेप पेल्विक तो कौन ताहले आम कौन करवा ना प्लाटीपोलेट यहाँ हूँ किडनी शेप ठीक अच्छे देन आंथ्रोपॉइड हूँ आमर शेप हूँ कौन ना आमर लंग ओभेल देन एंड्रॉइड हूँ कौन ना आमर कौन ना आमर मेल पेल्विक गायनाकॉइड हूँ आमर फीमेल पेल्विक ठीक अच्छे देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 व्हाट काइंड ऑफ द काउंसलिंग इज डन बाय ए पर्सन और गोटे काउंसलर हु मे बी अप्रोचेबल एंड अंडरस्टैंडिंग बट मे नॉट बी प्रोफेशनल और क्वालिफाइड ताको हम कौन कही किए सी करें ना जी आम काउंसलिंग करें कौन ताको हम कही था इनफॉर्मल काउंसलिंग कौन ना आम इनफॉर्मल क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन आंसर हो कौन ना आम डी देन क्वेश्चन नंबर 7 कौन कहूँ ना इन व्हिच ईयर डिड द मद्रास प्रेसिडेंसी सक्सेस encoding the Madras Nurse and Midwifery Act to promote the hiring of registered midwifery service during the childbirth केबे हितिला ना हमर 1926 रे रजिस्टर करथिले इन मद्रास रो प्रेसिडेंट देन ईयर इट इम्पोर्टेंट नहीं दी देन आसीबा 8 नंबर क्वेश्चन 8 रे कोन कहूची यहाँ हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज करेक्ट को टाइम मानक इन विट्रो मान कौन ना आमर आईवीएफ टाइम मान को स्टेटमेंटा करेक्ट ना कौन होता है ना ए रे कहला फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी via टेस्ट ट्यूब ना इन्वॉल्व द फर्टिलाइजेशन ऑफ द जाइगोट करा हुए ना द ओवम इज फर्टिलाइज विथ द स्पर्म एंड आउटसाइड द बॉडी ऑफ द वुमेन देन कहला आ कौन ना फर्टिलाइजेशन मेल एंड फीमेल गेमेट टेक प्लेस एट 40 डिग्री सेल्सियस तो सी इज द करेक्ट आंसर तो द ओवम इज फर्टिलाइज विथ द स्पर्म आउटसाइड द बॉडी ऑफ द वुमेन तो फर्टिलाइज कोठी होता है ना स्पर्मटा आउटसाइड द बॉडी ऑफ द वुमेन रे होते जोटा कि बाहर होता है देन ताको कौन इंसर्ट करा हुए तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन आईवीएफ स्टेटमेंट देन सेक्शन एबे पळे आसो मन कना
ना आमर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रो टॉप 10 क्वेश्चन। तो ए क्वेश्चन रे कौन कहला ना कम्युनिटी असेसमेंट टूल दैट आर प्रेजेंट विथ ए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कैन बी यूज्ड टू कलेक्ट वैलिड इंफॉर्मेशन अबाउट ए डेस्क इन ऑर्डर टू प्रोवाइड बेटर हेल्थ सर्विस। कौन ना ए डिजीज कल्चर कम्युनिटी और एनवायरनमेंट कौन ऑब्वियसली इन कम्युनिटी ही जेहेतु कम्युनिटी असेसमेंट कौन ऑर्डर टू इन कम्युनिटी। देन 10 in which NRHM are passed in the Indian parliamentary केबे NRHM pass होता 2005। then next question in which of the following is or are characteristic of community health quote out correct statement characteristic area called industrialization and the urbanization public behavior population orientation or pollution noise radiation and the correct answer is हमरो population orientation। ठीक अछि तो गोटे कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग रो मेन गोटे कैरेक्टरिस्टिक कोन ना हमरो पॉपुलेशन ओरिएंटेशन करा हुए। देन 12 टाइम लिमिट ऑफ द रजिस्टर बाथ विथिन तो नॉर्मल लिमिट ऑफ द बाथ रजिस्टर केते ना 7 डेज 14 डेज 10 डेज और 21 डेज एंड द करेक्ट आंसर इज 21 days। then next question then कहला WHO DEX assessment the quality safety and efficiency of COVID-19 vaccine and it is prerequisite for COVAX facility vaccine supply। तो कौन असेस करथिला ना लाइफ सेविंग ड्रग्स और इमरजेंसी यूजिंग listening lasting of highly efficient vaccine or emergency utilized list and the correct answer is कौन नामरो listening of highly efficient vaccine। question number 14 community health nursing emphasize on desk or wellness कହାର ना positive health negative health level of nutrition or community standard of living and the correct answer is positive health। then question number 15 that is the first step in the establishment of one health program for community member कोटा फर्स्ट स्टेप नहीं जोटा एस्टाब्लिश ऑफ हमना कम्युनिटी हेल्थ प्रोग्राम एरे को एस्टाब्लिशमेंट ऑफ द प्रायोरिटी कम्युनिटी डायग्नोसिस डेफिनेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव एक्शन और एस्टाब्लिशमेंट ऑफ एक्शन एंड द करेक्ट आंसर इज कम्युनिटी डायग्नोसिस। then next question number 16 which goal of the sustainable development goal जोटा SDG of United National talk about health and well-being कितने नंबर गोल ना हमारा 3rd नंबर गोल। then question number 17 जोटा सेक्शन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग CHN रो आछि तो CHN मोस्ट इंपोर्टेंट एटा ए सेक्शन दा ठीक अछि जोटे मोस्ट रिपीटेड है कि हम 2020 और 23 क्वेश्चन रे। तो कहला व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज एन मेन कॉजेस ऑफ जापानी एन्सेफेलाइटिस जापानी कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कोन ना गोटे वायरस प्रोटोजोआ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन algae and the correct answer is virus। then question number 18 polio is highly infectious disease caused by कहा द्वारा ही थाए ना प्रोटोजोआ वायरस बैक्टीरिया एंड फंजी and the correct answer is polio is a virus। then question number 19 infant mortality rate is the number of death of children of age
केते एज रे हम कैलकुलेट कर रहे हैं जोटा कि इन्फेंट मोर्टालिटी रेट ना 0 to 1 year per 100 live birth, 0 to 1 month per lakh birth, 0 to 1 year per 100 live birth और 0 to 5 year per 1000 of birth. And the correct answer is 0 to 1 year per 1000 birth. Correct answer is A. Then 20. In India, which of the following minister has the overall responsibility of monitoring the integrated child development scheme? तो को इंडिया रे को मिनिस्ट्री हाज ओवरऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थे हमारा आईसीडीएस स्कीम रो तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर एंड द करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट. Then 21. Baby who are born before the end of 37 weeks of gestational and having normal rate of intrauterine growth are called. जदि गोटे बेबी 37 week पूर्वर बात से ताक हम कौन कही था ना big for date, preterm, postterm और small for date. And the correct answer is preterm, which is less than 37 weeks of gestation period. Then next question. Then कहला up to which period does the term new baby is applied to baby? को पीरियड टा गला परे देन हमर कोन न्यू बॉर्न टा हमर अप्लाई होई थाए कोन ना अप टू 7 days, अप टू 1 year of life, अप टू 15 hour of life और अप टू 1 year of life. कोन हम समस्त जानछि 0 to 7 days को कोन कहिथाओ ना हमर early neonate. तो को टर्म गला पर कोन न्यूबॉर्न को है तो ऑप्शन ही जो ए इज द राइट आंसर. देखंतु ठीक अछि जदि क्वेश्चन आस्तिबो ना हमर early neonate देन जदि क्वेश्चन आस्तिबो कोन ना हमर इन्फेंट ही देले केते ना हमर 1 month to 1 year in case of infant. and the toddler age group है केते ना toddler है हमर 1 to 3 year. then 3 to 6 year होची preschool. then 6 to 12 होची हमर school going. and the 12 to 18 होची हमर कोन ना हमर adolescence age group. most important एटा age group. Then 23. Which of the following disorder of the red blood cell? Leukemia, thalassemia, hemophilia or anemia? Red blood cell कोन ना हमर करेक्ट आंसर होची ए. ल्यूकेमिया होची कोन ना ल्यूकेमिया होची कोन जोटा कि डब्ल्यूबीसी ब्लड कैंसर. देन थैलासेमिया रे कोन हुए ना इटा गोटे आरबीसी ब्लड डिसऑर्डर जोटा कि हमर कॉजेस करि थाए कोन ना हमर एनीमिया को. देन हीमोफिलिया होची कोन ना हीमोफिलिया जे ब्लड जिनटा कि हमर क्लॉट होई न थाए. ठीक अछि. देन 24. In the medication process, if the heart rate continue be less than 80 per minute, even after external cardiac massage with the medicine should be given. तो जिते बेले जदि हार्ट रेट टा कंटिन्यू लेस देन केते 80 per minute होची but the external cardiac massage of the medicine should be given. कोन दमा हमें ना पोटेशियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, एड्रेनालिन और सोडियम क्लोराइड. एंड द करेक्ट आंसर है कोन देता हमें ना हम एड्रेनालिन एडीआर. ठीक अछि. देन पोटेशियम बाइकार्बोनेट केते बेले दिया हुए
ना जिते कौन आमर लो पोटासियम लेवल सोडियम बाइकार्बोनेट कौन जिते आम कौन सीवियर मेटाबॉलिक एसिडोसिस केस रे कौन सोडियम बाइकार्बोनेट दिया हुए एवं सोडियम क्लोराइड कौन ना जेटे इलेक्ट्रोलाइट इम्बालांस होता है फ्लूइड लॉस से टाइम आम कौन सोडियम क्लोराइड आम दे था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सेक्शन MSN पढ़ी आसला MSN व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनिमल सेल मान कहते कोटा गोटे एनिमल सेल रो गोटे पार्ट न्यूक्लियस सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्मा द करेक्ट आंसर इज हमर कौन साइटोप्लाज्म सॉरी सेल वॉल व्हिच इज नॉट ए पार्ट ऑफ एनिमल सेल कौन सेल वॉल हमर प्रेजेंट न थाए बाकी सब कौन न्यूक्लियस प्लाज्मा साइटोप्लाज्म थाए। देन 26 व्हिच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन which of the following option most appropriately describe the term देखो inanimate object होची कौन जिते बेले एनीथिंग दैट व्हिच इज जिनटा कि हमर नॉट एलाइव और जोटा कि एलाइव न डेथ जहाँ द्वारा हमर कौन इन्फेक्शन टा स्प्रेड होता है। तो करेक्ट आंसर होची कौन ना ए नॉन लिविंग आर्टिकल लाइक पेन पेंसिल लिनेन और handkerchief which help to spread infection option B is the right answer ठीक अछि। तो इनएनिमेट ऑब्जेक्ट होची कोन जिनटा गोटे नॉन लिविंग जा थ्रू हमर कोन नामर स्प्रेड होता है इन्फेक्शन। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नाजुकम कहला नाजुकमल इन्फेक्शन अकर ड्यू टू द माइक्रोस्नोन तो नाजुकमल इन्फेक्शन कहा द्वारा होता है बैक्टीरिया वायरस फंगी और ब्लू ग्रीन एल्गी द करेक्ट आंसर इज बैक्टीरिया। देन कहला प्लाज्मा ऑफ द ब्लड इज मेड ऑफ प्लाज्मा ऑफ द ब्लड काको कि कोटे कंसिस्ट करते हैं ना प्रोटीन सॉल्ट वाटर सॉल्ट एंड कार्बोहाइड्रेट जेते हम कोन कहते ना प्लाज्मा प्रोटीन बोली गोटे वर्ड अच्छे मन रखिदेवे प्लाज्मा प्रोटीन आम कही तो प्रोटीन क्या फल आमर वाटर एवं सॉल्ट कि आमर कौन मेड अप होता है तो प्लाज्मा प्रोटीन वाटर एंड सॉल्ट। देन 29 द साइनस वेनारम एंड द आट्रियम प्रॉपर्टी मीट आर द मस्कुलर राइज इच कर तो साइनस वेनारम एंड द आट्रियम मस्कुलर रिज ताको मीट करथन ताको कोन कहा जाए ना हमर द क्रिस्टा टर्मा टर्मिनल्स ठीक अच्छे ये गोटे हार्ट रो गोटे कंडीशन जिन जगह कौन हुए ना आम साइनस वेनारम एवं आट्रियम टा प्रॉपर्ली मीट होता है ठीक है हार्ट रो मसल्स आम कौन कही था आमर क्रिस्टा टर्मिनल्स। देन क्वेश्चन नंबर 30 in a medical surgical nursing which of the following process is known as cleaning हम क्या कोई था in MSN रे the removal of all the foreign materials such as soil and the organic material remove the pathogenic only remove virus elimination of the many and all microorganisms the correct answer is removal of all the foreign materials such as soil हो came on organic material। then 31 the covering of the heart is covering of heart हम कौन कही था thorax sternum atria एकदम पेरिकार्डियम जेहेतु कार्डियम अच्छी कौन आउटर कवरिंग ऑफ द हार्ट इज पेरिकार्डियम जो कवर करते तो हार्ट रो केते लेयर थाए को लेयर ना हमर एपिकार्डियम हो हमर आउटर लेयर देन आछे हमर मायोकार्डियम हो हमर कोन जोटा कि हमर मिडिल लेयर देन आछे हमर गोटे एंडोकार्डियक हो हमर इनर मोस्ट लेयर। देन क्वेश्चन नंबर 32 व्हाई इज हैंड वॉशिंग
important step in the process for care of wound. तो कहीं आम हैंड वाश important role थाए in care of wound to avoid the further injury, to cover the wound and quick healing pain, to remove the extra moisture from the wound, or to prevent cross contamination. तो फर्स्ट आंसर कौन हम? to prevent cross contamination पे हमें to wash the hand for care of the wound. Then 33 जोटा कि हमारा एनवायरमेंटल हाइजीन एवं हेल्थ एजुकेशन और कम्युनिकेशन स्किल नहीं कि आसची. तो 33 एक नंबर क्वेश्चन कौन कहला ना व्हिच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए डायमेंशनल हेल्थ एंड वेलनेस. कोटा हम डायमेंशनल हेल्थ रो डायमेंशनल हेल्थ नो ना फिजिकल फिटनेस, एनवायरमेंटल फिटनेस, स्पिरिचुअल फिटनेस और सोशल. द करेक्ट आंसर है एनवायरमेंटल फिटनेस. तो कौन कौन थाए हमारे फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल थाए. ठीक अच्छे. देन नेक्स्ट क्वेश्चन कैंसर कॉजिंग एजेंट आर नोन आज. जो एजेंट आमर कैंसर होते कज मुख्य कारण है कौन कही था ल्यूकेमिया, कार्सिनोजेन, बिगिन ट्यूमर और लिम्फोमा. एंड द करेक्ट आंसर इज हमारा कार्सिनोजेन. ठीक अच्छे. ल्यूकेमिया होचे ब्लड डिजॉर्डर जोटा कैंसर होते जोटा कज होता है कजिंग एजेंट होचे कौन हमारा कार्सिनोजेन. देन क्वेश्चन नंबर 35 टू एंश्योर बैलेंस एंड न्यूट्रिशन डाइट टू द चिल्ड्रन ऑफ द हमारा कौन अपर प्राइमरी स्कूल ग्रुप फॉर वेजिटेबल ऑफ ईच स्टूडेंट जोटा मिड डे मील प्रोग्राम में केते दिया होता है न्यूट्रिशन पे ना केते ना अपर प्राइमरी एज ग्रुप रे ना 80 ग्राम, 65, 75 और 45 ग्राम केते ना हमारा 65 ग्राम पर स्टूडेंट. Then 36 which milk is considered to be the best milk and complete food for the children. Sorry, why milk is considered to be the best and complete food for the children. कहीं कि हमारा कौन बेस्ट एंड कंप्लीट फूड फॉर चिल्ड्रेन मिल्क को हमारा कंसीडर करा हुए ना ए रे कहला यहाँ गोटे गोटे रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट, विटामिन ए एंड कैल्शियम थाए. और इट इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन, इज ए प्रोटीन एंड कैल्शियम, इट इज ए सोर्स ऑफ प्रोटीन एंड फैट. एंड द करेक्ट आंसर इज इट इज ए रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, फैट एंड विटामिन ए एंड कैल्शियम. Then 37 by paying the attention to which of the following aspect personal health can an individual cope with regular life stress. कौन ना हमारा मेंटल हेल्थ जेहेतु स्ट्रेस आसी फॉर पर्सनल हेल्थ कोप पाई तो कौन हम ना हमारा मेंटल हेल्थ. देन 38 which of the following factor influence inclination towards alcoholism, smoking, use of drug, tobacco, chewing, irregular food habit which causing bacteria kind of health problem in हमारा कोट प्रॉब्लम देखा जाए behavior is a genetic, social or environmental. And the correct answer is a behavior problem. Then 39 which of the following play is an important role in the shaping one physical personality. And the correct answer is हमारा कौन hereditary. Now last question 40 which of the following nutrients is also known as body building food. तो बॉडी बिल्डिंग फूड आम क्या कही हमारा प्रोटीन. तो से कौन प्रोटीन पाउडर खुआ फॉर बॉडी बिल्डिंग. तो आपण मान भिडियोटा भल लगी तार प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन और रखने जब भिडियो नोट सर्वप्रथम भाई. नेक्स्ट वीडियो आपण मान को शॉर्ट क्वेश्चन हमर वन लाइनर जो लास्ट रहिला हमर टॉपिक हमर न्यूट्रिशन एवं मेंटल हेल्थ नर्सिंग फर्स्ट एड नहीं कि 40 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट बी रे आनिबी. तो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. थैंक यू.